हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अपक्लिक अकेडमी। माई सेल्फ गौतम। गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड होस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ होस्टिंग। सो डोमेन इज़ द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। डोमेन क्या होता है? लेट्स सपोज दिस इज़ द एग्जाम्पल। जैसे कि आपने यहाँ पे एक URL देख पा रहे होगे www.learnskill.in। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज डोमेन एंड दिस इज़ अ वेबसाइट एड्रेस. So it help users to find your website online. Okay, and what is hosting? Hosting is basically you can say a memory card of your website. That hosting is the space where website files are stored. Okay, so ये आपकी website का एक memory card होता है, आप you can say storage. Okay, so it keep your website live on the internet. That is where hosting works. इन सिंपल लाइन इफ़ वी से डोमेन टेल वेयर योर वेबसाइट इज़। डोमेन आपकी वेबसाइट के बारे में बताते हैं, लाइक व्हाट इज़ दिस वेबसाइट, लाइक learnskill.in. ओके, सो दिस इज़ योर डोमेन. And hosting store what your website is. Okay, so hosting is basically a storage of your website, so that is where domain and hosting works. Now let's understand with this house example. So domain name, what like home address, आपका जो घर का एड्रेस है, दैट इज़ वेयर डोमेन नेम वर्क्स. एंड होस्टिंग इज़ योर हाउस. ठीक है, हाउस के अंदर आप घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक बेड है, सोफ़ा है, टीवी है, AC है. ठीक है, ये सभी चीज़ें आप होस्टिंग के अंदर रखते हो. ठीक है, एंड योर एड्रेस मेनली www.upskill.in. so this is your basically a domain name and website file. Let's understand with this example, like furniture. So it's basically your website file. Okay, you can have an address but no house. Okay, you can have an address but no house, which means आप domain name buy कर सकते हो. You can get this domain upskill.com. okay, this is your domain name, बट यू कैन हैव अ हाउस बट नो एड्रेस. ओके, आप होस्टिंग बाय कर सकते हो विदाउट owing a domain name, and vice versa. You can buy a domain name without getting a hosting as well. Okay, but to live properly you need both. ठीक है, जैसे वेबसाइट है एग्जांपल, लेट सपोज myportfolio.com. ओके, ये आपका एक एड्रेस है, ऑनलाइन एड्रेस है, बट इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी, कंटेंट होगा, वीडियोस होंगे या इमोजीज होंगे एट्सेट्रा, दैट इज़ बेसिकली स्टोर्ड ऑन योर होस्टिंग. ठीक है, so that is how domain and hosting works. And what are the key difference among domain and hosting? So key difference among shared hosting. What is shared hosting? First of all, you are running multiple website on a single web server. That is where we called share hosting. Okay, आप जो आपके पास hosting है उसको आप शेयर कर रहे हो more than one website के लिए. Okay, that is where shared hosting works, and it is basically low cost just because आप single hosting buy कर रहे हो and multiple websites run कर रहे हो. और it is mainly best for beginners, like जब आप beginner होते हो you buy a shared hosting and you can run multiple website on a single hosting. Okay, so example student blog या small websites. Okay, and next is VPS hosting, virtual private space. This is the full form of VPS, private space. So you will get more control and speed. Okay, so shared hosting से, instead of buying shared hosting you can use VPS, but it will be more costlier than shared hosting. but ये क्या होता है, ये आपके बिजनेस को, आपकी वेबसाइट को एक प्रॉपर स्पीड पे रन कर सकते हो आप उसको. ठीक है, आप शेयर्ड होस्टिंग में मे भी हो सकता है कि वेबसाइट में आपकी ग्लिच आए, बट लेटर ऑन वो चीज़ हो जाती है कंट्रोल. ठीक है, थोड़ी देर में कर लो. हाँ, example, let's suppose growing business sites. Okay, so what are the growing business site? You can use these websites for your VPS hosting as well. Okay, then third point is dedicated hosting. So you are owning one server for one website, definitely it will be more optimized, and their site performance will be far better than shared hosting. Okay, so example, big companies like Flipkart, Amazon, they all are e-commerce sites and they mainly need डेडिकेटेड होस्टिंग, सो दैट बिकॉज इनकी वेबसाइट पे यूज़र भी बहुत सारा
बहुत सारे यूजर्स आते हैं ऑन अ सिंगल टाइम, ऑन अ मल्टीपल टाइम, सो दे नीड अ डेडिकेटेड hosting so that their business will not affect just because of their hosting. And the fourth one is cloud hosting. So website run on multiple server. Okay, so your website are running on multiple server, very reliable and scalable. Okay, सो दिस इज़ बेसिकली ओ टी टी प्लेटफॉर्म, सास ऐप ओ टी टी प्लेटफॉर्म मेनली जैसे हमारे पास है नेटफ्लिक्स. Okay, so they are using these kind of cloud hosting just because they don't want any glitch, just because of network error, because there are a lot of person using this on a single time. Okay, so this is how uh, cloud hosting works. So let's move ahead. And why hosting is important? So hosting important क्यों होती है? Just because जैसे कि मैंने आपको बताया कि hosting जो है वो हमारी वेबसाइट की स्टोरेज होती है. ओके, दिस इज़ आवर वेबसाइट स्टोरेज. एंड मेन बेनिफिट होती है कि ये हमारी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, डाटा सिक्योरिटी होती है हमारे पास, अप टाइम, वेबसाइट ऑलवेज लाइव, वेबसाइट विल बी 24/7 ऑलवेज, आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव होती है. एंड ईमेल होस्टिंग, if you are facing any kind of problem in your hosting, then you will get email on behalf of hostinger. These all are platform mainly that you can buy hosting on your website, for your website. And backup and recovery, if your data will be breached by someone, then you will definitely get backup and recovery of your website. वो आ गई थी एक बार, चली गई. Bad hosting effect. What are the bad hosting effect? It will be slow your website, your website may be down, गूगल रैंकिंग नहीं देता आपकी वेबसाइट की, जस्ट बिकॉज योर वेबसाइट इज़ वेरी स्लो, हमेशा आपकी वेबसाइट डाउन रहती है. सो गूगल इज़ नॉट गिविंग यू दैट मच अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस. एंड बैड यूज़र एक्सपीरियंस. गूगल रैंकिंग आपको जब ही देगा, गूगल रैंकिंग आपको कब देता है? जब यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होता है. ठीक है, but when your website is slow, when your website is down, so google won't rank, give you ranking that much. Okay, and real example is like fast website is equals to better SEO for more traffic. Okay, जब आपकी वेबसाइट पर परफेक्ट होती है, आपका SEO परफेक्ट होता है, only then you will get up more traffic as well. If you are getting slow website, visitor leave just because they have a bad experience. Okay, so these all are the point that we have to consider while understanding what is hosting and why hosting is important. And if you find this video informative, make sure you like our channel. If you still get any confused in any point, so make sure you comment on comment section so that we will revert to you. And if you find this video valuable, then make sure you subscribe our channel. Thank you so much. Myself Gautam.